हमारी कौम का मिजाज बड़ा चटपटा रहा है शुरू से। और आप चाहे ड्रामे देख लें, चाहे खाने देख लें, चाहे ख़बरें देख लें, ड्रामे में अगर सास है तो चटपटा है, सास नहीं है तो सॉस है, लेकिन चटपटापन ज़रूर चाहिए हमें। सही बात है। और ये बढ़ता भी जा रहा है कुछ चटपटे का शौक। अच्छा मुझे बताएं खालिद साहब, आपका कौन सा ऐसा कोई फेवरेट फूड है जिसको आपको ऐसा लगता है कि बगैर सॉसेस ऐड किए के बगैर ब्लैंड है? मेरा ख्याल कोई एक खाने का नाम लेना तो मुश्किल है, बल्कि अब एक चैलेंज उल्टा हो गया है। अब तो सॉस की तादाद इतनी हो गई है। मैं अभी एक ग्रोसरी स्टोर पे था और एक में कंपनी, बहुत सारी कंपनीज के डिस्प्ले थे, सो वहाँ पर इतनी वैरायटी लगी हुई थी कि आप मतलब मैंने देखना शुरू किया सिराचा सॉस, गार्लिक मेयो, हनी मस्टर्ड, थाउजेंड आइलैंड, साल्सा सॉस, हैलापिनो, हनी मस्टर्ड, और आप देखते चले जाएं और यू गेट कंफ्यूज कि भाई मैं क्या लूँ इसमें से, कौन से खाने पे क्या डाल के खाऊं। अच्छा, ये जो आपने इतनी सारी सॉसेस बताई हैं, आई एम श्योर इसमें बहुत सारी और भी सॉसेस हैं। हमारे साथ आज बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं जो और हमारी कॉन्वर्सेशन सॉसेस से स्टार्ट हुई है। आई एम श्योर हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे बात करेंगे। तो लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट फॉर टुडे। बिल्कुल, वो सॉस की बात भी हमने इसीलिए शुरू की। हमारे साथ पाकिस्तान की एक वन ऑफ द बिगेस्ट सॉस मैन्युफैक्चरर कंपनी डिपिट के CEO ज़ीशान हैदर साहब मौजूद हैं। ज़ीशान, वेलकम टू स्पॉटलाइट टॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। और आप आ गए तो हमारा ख्याल था आज हमारी टेबल पे सॉस ही सॉस रखे होंगे, लेकिन कोई नहीं, वो हम बाद में आपसे मंगवा सकते हैं फिर। सो ये डिपिट तो ब्रांड नेम है जी। कंपनी, इज इट द कंपनीज नेम या कंपनी का भी मैंने सुना है बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका एक नाम है कंपनी का भी? कंपनी नेम इज डिफरेंट। कंपनी नेम इज ITT Foods. And ITT Foods stands for It's Truly Tasty. So that's where we started. It's truly tasty. Tasty. Okay. Then that's for where we started off, because we didn't start it from Dipit. If we go back, so when I left my previous job at Philip Morris, I started a restaurant called Wingit, and I used to make chicken wings, and we used to make sauces for those chicken wings predominantly. So that's where the journey started from. अच्छा, सो आपकी जर्नी में तो हम आगे जाते हैं। पहले तो मेरा ख्याल मतलब ये जान लें कि आपने कहा कि यू वर वर्किंग अर्लियर, यू आर इन एम्प्लॉयमेंट। यस। सो वहाँ से ये तो बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा रिस्क है। तो कौन सा सॉस इस्तेमाल किया था कि ये रिस्क लेने का सोच लिया आपने? इससे पहले आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है? जी, इंजीनियरिंग का भी है। इंजीनियर एंड लेटर MBA? जी, आई डिड। और फिर विंगिट and then सॉस, और उससे पहले डिपिट का एक्सपीरियंस। ये जर्नी को स्टार्ट करें फ्रॉम द इंजीनियरिंग के व्हाट इंजीनियरिंग जो भी जिस डिसिप्लिन में आपने किया। So I did my engineering from NED and I started working for a company called Siemens. उस वक्त Siemens बड़ी मशहूर कंपनी थी, अभी भी है लेकिन हमारे मुल्क में अब शायद इतनी नहीं रही, बट है। So और मैं वहाँ I was working over there and I remember back in that day telecommunication was coming in a boom. So I realized that I was an electrical engineer in the power sector and then telecom. So I quickly shifted from electrical to telecom and I started working for them on a project which was the implementation of Telenor across Pakistan. So I traveled a lot with them and I got a really good exposure over there. Then I decided that I should do something else. So I wanted to grow very, very fast. Like any young person at that age bracket, I thought, I should grow every year, every 6 months, like that. So I said कि नहीं, कुछ करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए. So I applied for a test at IBA and I failed. So then I decided, I need to do something different with my life. So I left my Siemens job and I joined Unilever. So I joined Unilever, and at that time one of my boss, he said कि, it would not be a bad idea for you to apply to LUMS if you don't want to do IBA. So I applied to LUMS and I got in. And then I left my job at Unilever and I went for my studies to LUMS. And again, a person, I belong to a very humble background, so it was very difficult for my mother because my father was not alive, so it was very difficult for my mother to adjust कि ये अभी पढ़ाई ख़त्म की है, फिर नौकरी कर रहा था, फिर अब दोबारा पढ़ने जा रहा है, और what is he doing? So और वो भी अब लाहौर जा रहा है, और तो but I decided I want to go. So I left and I joined LUMS and I did my MBA.
Then I started working for a company called Abraj because they recently took over. The K Electric project was there, and there were 2 other projects at that point of time, Baiko, and there was one more, BMA Capital, doing all of that. So I started working for the K Electric project. I got very good bosses. I did amazing over there in the 2 years. And then in 2010, I got a call from Philip Morris because they were acquiring Lexington Tobacco at that point of time. So the acquisition was happening, and I had done a similar acquisition at K Electric with the branch. So they said, you know, you might be useful. You might be useful. So I joined that ship, and I started working over there. They really invested me a lot. I have been very fortunate. I really got good bosses. I just got 3 bosses along my whole life, but they were amazing bosses. So I got one boss, and I started working, started growing over there. They said they sent me for a couple of trainings for product development. Then they sent me to Philippines. I started working in Philippines for product development. I was looking after the Asian 17 markets of Asia for product development. And then one fine day, my mom was diagnosed with cancer. So I decided that I want to go back to Pakistan, and I want to, you know, stay there. So yeah, I want to stay there, get it treated, because cancer treatment is a little bit tricky because of the chemo and everything. It's kind of a journey. So I decided I want to. So I left that and I moved back here to Pakistan, and I started working over here, back again at Philip Morris. And one fine day I said, I'm not really enjoying. I was enjoying it, but I was not really enjoying it myself. And I thought, you know, if I'm not enjoying, then what am I doing? Because across my career, I've enjoyed my work a lot. You know, I'm a person who like goes up at 9:30, and, you know, come back when the work is done. And I used to really enjoy it. I used to get a kick out of it. And I felt I'm not enjoying it. It's not the same. I said I want to do something else. At that time, I recently got married also. So when I told my wife, she was from a very different background. She said, "What are you going to do?" I said, "I'm going to leave it. I'm quitting it, and I'll do something else." She said, "Are you crazy? What are you going to do? Don't do this." So I said, "I'm not worried. Why are you worried? And you know, I'll do something else. At least I know for sure if something doesn't work out 6 months back, I can go back. You know, somebody will take me. If nothing else, I will ask for the boss to take me back." So I left that, and I started my own restaurant called Wingit from a food event called Karachi Eat. It used to happen at Frere Hall back in that day. So yeah, there I started from. I got a lot of tanas from my mother and all of कि तुम क्या फ्रायर पे खड़े हो रहे हो, तुमने कभी जिंदगी में नहीं किया ये, तुमने ये नहीं किया. Were you fond of cooking earlier? Not really. Little bit, but not really. Because when I was living in Philippines, I used to do it myself, but not really fond of cooking. Yet you decided to? Yeah. But लेकिन बहुत से लोगों को शादी के बाद ना फ्राइंग पैन से एटलीस्ट फेमिलियरिटी हो जाती है. So I really started doing it, and I started enjoying my work again. So from there, but I always during that cycle, there was something in my mind that, you know, we should scale it up. You know, मतलब इसमें से business कैसे निकालना है. And I said to myself, you know, we should do this. So the first year went, the second year went. I went in a different direction. I was expanding the branches of it. And the third year I said, yeah, nahi, I want to do something bigger, you know, not this, bigger, out of Wingit. So I started making these sauces, and I started putting them in a small plastic cans and selling them from the restaurant itself. And people used to come and buy them from the restaurant. 5 de do, 6 de do. And one of my friends said, if you're putting it this, why don't you put it in a decent bottle? I said, हाँ. And the concept was not bottle. He said it because Remican was expensive and the bottle would be cheaper from the bottle gully. I said, yeah, you're right. Let's get the bottle. So I went to the bottle gully, and there was one kind of bottle everywhere. I said, I don't want this. He said, you are being too perfectionist. इस तरह नहीं है. I said, no. I want my own bottle. And I said, okay, fine. I'll do some work. So I started some work. Me and my wife, we started making some designs, all of that. And then we went to some, you know, glass manufacturer. क्या आप हमें बोतल बना दें? उन्होंने बोला आपको कितनी चाहिए? मैं 100, 200, 300 दे दें और कितनी चाहिए? उन्होंने बोला भाग जाओ दरवाज़ा वो रहा. तो हम तो इतनी बनाते नहीं हैं.
तो मैं भगा दिया उन्होंने मुझे. But I said and then my wife said let's put it in the bottle which is available. I said no, I'm not going to do that. I want to create a brand out of it, so I want my own brand. थोड़ा बहुत तो पढ़ा लम्स ने मार मुँह का पढ़ा दिया था, तो मैं बोला नहीं ये तो कोर वैल्यू है, तो हमने करनी है ऐसी कम तैसी. So what I did was I went to Hyderabad because somebody guided me बोतल मार्केट में, ये जो टावर के पास है, कि भाई अगर आपको इतनी ज़्यादा ख्वारी करने का शौक़ है ना तो बस पकड़े और जाएँ हैदराबाद, वहाँ पर जाकर देखें. सो आई वेंट देयर, आई लुक्ड अराउंड द बॉटल, किसी में बबल आ रहे थे, किसी में कुछ आ रहा था. आई सेड नो आई वांट. समबडी टोल्ड मी देयर इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ चूड़ीज़ who were brilliant and they were great and now they've stopped selling those. तो उनकी भट्टी खाली पड़ी हुई. अगर वो मान जाएँ बाबा जी तो आप काम करवा लीजिएगा उनसे. तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं सर मेरे लिए बोतल बना दें. और बोला कितनी चाहिए, तो मैं 500 नहीं इतनी 1000 बना दूंगा, बहुत ज़्यादा के करा दी. तुम अच्छे बच्चे हो इसलिए तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं हम. उन्होंने बेचारे मोल्ड बनाया, अपने पैसों से बनाया है, मुझे नहीं याद उन्होंने मुझसे पैसे लिए, और उन्होंने बोतल वो बना कर मुझे एक भेजी सैम्पल कराची में. 1-2 हफ्ते बाद मैंने उस पर से भी नुक्स निकाल कर उनको वापस भेज दी कि ये तो सही नहीं है, ऐसे कर ले. अल्लाह का करना था. ही अगेन रिवाइज्ड इट एंड ही सेंड इट बैक टू मी. आई लाइक्ड इट एंड आई सेड ओके फाइन, गिव मी दिस बॉटल. सो ही मेड 1000 के कुछ करीब एंड ही सेंड इट टू मी थ्रू डेवो. मैं सोलापुर से जाकर डेवो से बोतलें लेकर आया. हमने अपनी सॉसेस भरी उसमें और हमने भर कर लेबल शेबल्स प्रिंटर से निकाल कर बना कर. वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम फिलिप मॉरिस, he left his job. He was heading treasury there. He left his job and he started a store called Springs. A store called Springs and so उस वक्त I think entrepreneurship का कोई आया था. मेरे सारे दोस्तों ने नौकरियां छोड़ दी थी मेरे बाद. एक ने डिस्ट्रीब्यूशन खोल ली थी, एक ने ये स्टोर खोल लिया, मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया, एक और ने वो खोल ली थी, शू कंपनी खोल ली. So everybody went their way. I don't know. So I went to him and I said यार जुनेद, ये ना अपने इसमें बोतलें रख लें, अगर बिक जाएंगी तो मेहरबानी तेरी, अगर नहीं बिकेंगी तो नेक्स्ट डे आई विल कम ऑन मंडे एंड आई विल टेक देम. सो इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम. वी स्टिल सिट डाउन एंड समटाइम रिमेंबर दैट डे. सो आई वेंट ऑन आई थिंक ऑन अ थर्सडे नाइट जब वो बंद हो रहा था एंड वी पुट द बॉटल देयर. साफ़ सफाई कर जो बाकी ब्रांड्स थे उनको हमने हटा उठू कर पीछे किया, अपनी जगह बनाकर हमने सेट आउट किया. And we kept it. And I think on Monday, and then I was waiting for his call anxiously कि बिकी नहीं बिकी, what happened. और फिर उसका मेरे पास फ़ोन आया सैटरडे वाले दिन कि यार वो बोतलें और ला दे. मैं वो बोतलें तो है नहीं, जीती थी तेरे को दे दी, वो तो अब बनवानी पड़ेंगी. वो बिक गई. वो 1000 नहीं थी, हमने कुछ अपने रेस्टोरेंट में भी सजा दी थी. 3 ब्रांचेस थी तो हमने विंगिट में भी सजा दी थी, कुछ उसे दे दी थी. तो मेरे पास एक्स्ट्रा बोतलें कोई नहीं थी. तो मैं भाई जो थी वो तुझे दे दी, अब मेरे पास कुछ नहीं है. तो उसने मुझे बोला ये क्या कर रहा है तू. तो मैं बोला अच्छा मैं कुछ करता हूँ. सो आई वेंट टू हैदराबाद अगेन ऑन मंडे मॉर्निंग. आई वेंट टू माई साइड कि वो जो बोतलें आपने दी थी वो तुम मैंने बेच दी. वो बोला यार तुम तो बोले तुम्हें महीने के लिए 1000 बोतलें चाहिए, तुम 12 आ गए हो. तो उन्होंने मुझे बिठाया अपने पास. उन्होंने बोला तुम काम नया शुरू करो. मैं जी. तुम बोला नहीं तुम ज़्यादा बनाओ. मैं नहीं मेरे जहन में ये आया है लाइक एवरी यंगस्टर की अपना पैसा बनाने के लिए मुझसे ज़्यादा बोतलें बनवा लेंगे, मैं फंस जाऊँगा. मैं नहीं बना रहा आपको, आप पैसे कमाएंगे, मैं फंस जाऊंगा. वो बोला भाई मैं तुझे बना कर दे रहा हूँ, मुझसे ले जा, जब तेरी बिक जाए तो पैसे दे देना मुझे. सो उस ज़माने में भी अच्छे लोग होते थे. हाँ आपका मुझे पता नहीं बट वो हर ज़माने. तो जब आप अच्छे हो ना तो फिर अच्छे लोगों तक आपकी रसाई हो जाती. तो उन्होंने मुझे वो बोतलें दी और कुछ उन्होंने अपने पास एक्स्ट्रा बना कर रख ली कि दोबारा ये रोता पिटता आएगा तो होगी. वी स्टार्टेड फिलिंग इट एंड देन वी स्टार्टेड लेबलिंग इट and then started giving it to various markets. जिधर दोस्ती थी, जो मुझे फिलिप मॉरिस की वजह से जानते थे या जो दोस्त मेरा सेल का था वो बोलता था मेरी दुकानदार से अच्छी दोस्ती है, मैं उसको पकड़ ले जाता था यार मेरी बोतल रखवा कर दे इधर. और आई थिंक उस वक्त लोग रिटेल मार्केट ने मुझे बड़ी हेल्प की. उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया. और स्पेशली फूड्स, मेरा खुद रेस्टोरेंट था तो मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट वालों को जानता था. एक व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिटी में आई यूज्ड टू नो देम. कराची फूड होता था तो उधर हम सब मिल जाते थे, गपशप कराते. सो आई वेंट टू ऑल ऑफ दोज फ्रेंड्स. आई सेड यार तुम लोग ये फलाना से लेते हो, हमसे भी ले लो.
तो उसने बोला हाँ, ऑल दे न्यू कि यार ये इसका सारा विंग्स चलता ही सॉसेस पर है। और वो कौन से सॉस थे जो लाइक बारबेक्यू एंड बफलो एंड टबास्को एंड ऑल ऑफ दीज ना। अच्छा, और ये फिल कहाँ हो रही थी? अभी फैक्ट्री तो थी? अभी हम विंगेट के बेसमेंट में भी हमने फिल की है। सो रेस्टोरेंट के बेसमेंट में वो फनल से कुप्पी लगा कर हमने वो फिलिंग करके कैप कर उसे वहाँ पर भी रखा है। सो आई वेंट टू दीज फ्रेंड्स जिनके रेस्टोरेंट थे, उन्होंने बोला भाई बोतलें नहीं, हमें ड्रम चाहिए होंगे। तो मैं ड्रम भी बनाता हूँ। फिर मैंने वो ड्रम बनवाए, फिर मैं ड्रम में भर कर उनको दिया। देन आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन स्लोली एंड देन ग्रेजुअली यस देयर वाज नो लुकिंग बैक। कितने साल पहले की बात है? ये 2018 के अक्टूबर की बात है where I started. So 16th January I opened up the Wingit first shop and 2018 October I started Dipit with the bottles. अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि 2018 के जो आप कह रहे हैं ना, उसी ज़माने में हमारे यहाँ आई थी, ये माइलस्टोन पे भी शायद रखी हुई थी। माइलस्टोन भी तो और हमारे यहाँ ये आई कि भाई ये नया कोई सॉस है, जैसे आई आस्क्ड फॉर के सोया सॉस मंगवा लें, एंड देन वी लाइक दो सॉसेस सो मच कि उसके बाद से हमारे मैं यही बता रही थी खालिद साहब को कि फिर ये डिपिट ही आ रहा है। बहुत बड़ा किरदार उसमें उसकी पैकेजिंग का। yes. अब आपको आदत थी पाउचेस की और सिमिलर लुकिंग बॉटल्स की, अब डिफरेंट बॉटल डिफरेंट पैकेजिंग। तो जब आपने ब्रांडिंग पढ़ी थी लम्स में, no, but my wife helped it also. She's a fine arts artist, so she did the labels. So labels are done by her. So she did the labels. Was so crisp and yes, fresh. so she did the labels, and I was doing more of the execution, the operation, the sales bit, and she was doing the fine arts वाला जो काम। आपने उस बात को सच कर दिया कि behind every successful man there's a woman and behind both of them there are sauce. yes, there's sauce. There has to be sauce. Definitely they have to be अच्छा, वो जो ब्रांड की ज़बान में ग्लव्स कहते हैं ना, रेड ओशन। सो आप सॉसेस के साथ जब एंटर हुए तो इट वाज ऑल अ रेड ओशन। इंटरनेशनल मार्केट, सारे इंपोर्टेड ब्रांड्स, लोकल भी बड़े जाइंट्स बैठे हुए थे इसमें जो काम कर रहे थे। सो हाउ डिड यू एबल टू एक तो स्ट्रोक ऑफ लक है, वो अपनी जगह है, सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, सिचुएशंस बिल्डअप हो जाते हैं, बट आप इंटेंशनली भी कुछ स्ट्रैटेजीज लेते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि अच्छा यार इस तरह की पैकेजिंग करो, इस तरह की प्लेसमेंट करो, इस तरह की ट्रेड मार्केटिंग करो। सो एनी ट्रिक ऑफ द ट्रेड्स दैट यू पुट इन प्लेस एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड दे हेल्प्ड? If they did not help, then what happened? How did you cope with those? अच्छा, जो आपका सवाल है कि what happened and what not happened, I would be very honest with you. There are two things in it. One is that when I started this, I used to always see कि and there was this question in my mind कि why is when I used to go and buy these sauces, because before that you need to keep in mind that I was in Philippines and Vietnam and with Philippines and traveling across the world. उन्होंने मुझे बहुत ट्रैवल कराया। I think जितना I think शायद मेरे नसीब में बहुत ट्रैवल था। तो I used to travel I think each month somewhere because I was looking after 17 markets. Okay. And my KPI was I used to have to visit them once every year. Wow. So each month I was somewhere at some market, So I was getting exposure of various cultures, various foods, various product development, various tastes. So there was all of that in my background and somewhere in my mind. So I said, जब मैं वापस आया पाकिस्तान, so I used to go and see, ये सारी बाहर की क्यों लेनी, अपनी क्यों नहीं? और अपनी जो थी वो थर्ड क्लास से भी ज़्यादा थी, वो मैं अपने दुश्मन को भी ना दूँ, वो इस तरह की थी। लाल रंग मिला हुआ है, किसी में काली इंक मिली हुई है, all of that was just very pathetic quality. And I used to always come back and say कि why can't we do this, why can't we make a good product? And so that was one of my starting point, that the market was empty because nobody was making good product. And when I talked to the pundits and the gurus of this food industry, all of them said कि यार अगर ये करना होता तो हम नहीं कर लेते, ये अगर आसान बिकना होता तो हम नहीं बेच लेते, हम तुमसे मतलब बहुत बड़े हैं। And I used to say कि यार बात तो सही है, अगर बेचना होता तो मुझसे अच्छी बनाकर बेच देते, और बात तो सही कर रहे। But I was so drained with my idea and my thinking. I said whatever it is. I will do it. Maximum what will happen, I will fail. If I fail, I will wind up, I will go back, and if you're coming from a corporate sector, you know yourself. You say यार कोई ना कोई मुझे 1 लाख रुपए की तो नौकरी दे ही देगा, कोई ना कोई मुझे इतनी तो दे ही देगा, और जितनी मेरी जान पहचान थी, मैं बोला लम्स के साथ एनडी के साथ इतने पैसे तो कोई ना कोई मुझे गेट पर दे देगा, तो मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ काम। एंड देन आई वाज कॉन्फिडेंट माई सेल्फ कि यार मैंने इतना काम किया हुआ, क्या मतलब।
एंड देन द गुड पार्ट वाज दैट मेरे बॉसेस से जब मैंने बात की ना, ये कह रहा हूँ, तो मुझे दोनों ने, एक का नाम मिगेल था, एक का नाम रिकार्डो था, दोनों ने मुझे ये नहीं बोला कि यार ये तू क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला कर लो, कुछ नहीं होता तो हमें एक ईमेल लिख देना. अच्छा. तो आई हैड दैट यू नो सेफ कॉर्नर इन कंफर्ट इन माई माइंड कि यार है कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होगा. जिस दिन मैंने रिज़ाइन करना था उस दिन रात, पूरी रात मेरी बीवी नहीं सोई थी, मैं सो रहा था आराम से. तो मैं सुबह उठा और मैं तैयार होता ऑफिस के लिए, बोली मैं सोई नहीं. मैं, तू भी नहीं सोई भाई? तो बोलती यार व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड रिलैक्स, नथिंग विल हैपन. सो आई थिंक एक वो था कि यार कंफर्ट था. ये सब बातें हम सच्ची सच्ची बता रहे हैं क्योंकि आपकी बेगम भी सुनेंगी ये प्रोग्राम. हाँ, बिल्कुल सुनेगी वो. बट देयर वाज, अगेन आई बिलीव फर्मली, if you make a good product, there's a market for it always. If you do a good, if you are giving services, even if you give a good service, there's a customer always for you. कहते हैं ना क्वालिटी पैसा बाय प्रोडक्ट है क्वालिटी Yes. का. हम दरअसल पहले दिमाग में पैसा हम पहले पैसा सोचते हैं और फिर बाद में हम उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी को एनालाइज करते हैं. आप पहले प्रोडक्ट बनाए अच्छा और फिर आप उसके हिसाब से उसकी प्राइस सेट करें. क्योंकि हमेशा हम क्वालिटी ढूंढी, कोई ना कोई क्वालिटी ढूंढ ही रहा होता है. Exactly, there's always consumer for quality. So I said that we'll make a good quality product and then we'll put it up there. We'll not compromise on the product. Until today, at Dipit, the core fundamental, if you go and ask anybody, is that the quality has to be the same from which it was on day one, you know, because every sauce is either checked by me, my wife, along with the obviously there's system and the protocol, everybody, but that's the thing that we consume at home. So the first complaint will come from us ourselves, you know, rather than anybody else. So that's a very fundamental thing. Then the second question about what happened in the market was, to be, for that my answer would be, which is, I don't know whether you want to hear or not, I was very lucky. You know, when I brought in the sauces, I think Imran Khan government came or something happened, the dollar went up. He put on duties on the imported sauces, so the imported sauces that went was away. the best time to launch local product. And then another thing happened was that at that point of time, economy was also picking up, and Pakistan was performing better in COVID rather than a lot of other people in before even COVID also. We were picking up, right, because election हुए थे उसी वक्त, उसी साल हुए थे 2018 में, so things were getting better. So I think I was very lucky because I got the momentum. And the tides were in our favor, so we took that tide. कहते हैं ना right place Yes, at the right time. right place at the right time with the right product at the right price. So all the P's were there for us. So we did that, and then we got lucky, and then market पे मिले. And I would say here the credit should go also to our consumer and the people in the food industry. They helped me a lot. I remember मैं बाबी टुनाइट गया और मैंने उधर के ओनर्स को बोला हमारी ये केचप है, आप ये रखिए. उन्होंने ट्राई की, उनको अच्छी लगी. बोला अच्छा आज से मैं, एक और बहुत बड़ा ब्रांड था, उन्होंने बोला आज से मैं ये रिप्लेस करता हूँ, तुम्हारी आ जाएगी. मुझे किसी ने दूसरा सवाल नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया. इसी तरह मैं बहुत सारे दोस्तों के पास गया जिनकी बड़ी बड़ी चेन्स थी. आई आस्क्ड देम कि आई नीड अ फेवर, एंड ऑल ऑफ देम सेड के नोबडी क्वेश्चन मी के नहीं, या किसी ने मुझे लटकाया नहीं. सब ने मुझे बोला अच्छा ठीक है, और सब ने मुझे ये बोला भाई क्वालिटी ना ख़राब करी, मेहरबानी तेरी. एंड वी हैव स्टक टू दैट, एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड. एंड आई थिंक शेल्फ में हमें फ़ायदा ये मिला, हमने बड़ी डिफरेंट अप्रोच ली थी शेल्फ पर. हमारे पास कोई पैसे ही नहीं थे किसी को कुछ देने के लिए, कुछ ट्रेड मार्केटिंग जो आप पूछ रहे हैं हमारे पास थे ही नहीं कुछ देने के लिए. मेरे पास वही थे पैसे जो मुझे फिलिप मॉरिस ने दिए थे जाते हुए, तो वो तो मैं सारे लगा चुका था, वो सारे गवा चुका था. तो मेरे पास थे ही नहीं. मैं तो सबसे ये बोलता था भाई कर सकता है तो कर दे, मेहरबानी तेरी. आई थिंक मेरे कॉर्पोरेट करियर से ना सब बहुत सारी दोस्तियाँ थी, तो वो हेल्प करते थे मुझे. वो एज ए दोस्त लेते थे, एज अ बिजनेस पार्टनर नहीं लेते थे, दोस्त लेते थे, तो वो हेल्प कर देते थे. सो मैं तो जाकर खुद बोतलें रखा था उनके स्टोर में, वो बेचारे हटाते नहीं थे, वो बिक जाती थी, मुझे पैसे दे देते थे. सो दिस इज़ यूज टू हेल्प. आई थिंक हेल्प उस वक्त ये हुई कि इम्पोर्टेड सॉसेज महंगी हो गई और कम आने लगी. सो वी बिकेम देयर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट. तो वो फिर हमें जगह वो खाली होती गई, तो हम ही को मिलनी थी वो जगह, क्योंकि बाकी जो शहजादे थे वो बनाते नहीं थे सॉसेस कोई भी, और वो लाल रंग काला रंग बनाया करते थे सब, तो वो लोग लेते नहीं थे. Because consumer is very smart. Lot of time in the meeting room we think consumer is dumb, but consumer is the most smart in this whole equation. So consumer pick up the quality right there at the go. So I think consumer started picking it up, and from there we worked out.
So there was not as such any strategy at which we did at trade. The only strategy we did at trade or at Dipit was quality and right price. Not to, we didn't, yes, one thing we didn't did was that हमें किसी एक वक्त में ये आया कि जी अब इम्पोर्टेड सॉस ख़त्म हो गया, अब आप प्राइस बढ़ा दें, जो नॉर्मली माइंडसेट होता है, अब ये ख़त्म हो गया, अब आप ये बढ़ा दें. I said no, we will not overcharge the consumer, we will charge what is our due share. We will not overcharge them because they have given us respect, so why should we not, we should reciprocate the same. So and until today, if we see, we make a peri peri sauce which is exactly similar to the other peri peri, the international ones. We have 1/3 the price. We have never increased the price on it because we said कि यार जो हमारा due share है, we'll just keep that as a constant. That's it. इस पूरी कॉन्वर्सेशन से ना एक बात मेरे जहन में आई कि एक तो आपको शायद आपका जो नौकरियों के ऐसे ट्रैवल था उस एक्सपोजर ने बहुत फ़ायदा दिया, बिकॉज वेरेवर वी गो वी टेस्ट द फूड देयर. तो वो आपको होता है ना, आपको कुछ तो कोई तो था ना कि हाँ भाई मुझे इससे मैच करना है टेस्ट. दूसरा पैकेजिंग, इट मैटर्स अ लॉट. हमें बिल्कुल शुरू में लगा कि ये लोकल प्रोडक्ट नहीं है. दिस वाज द रीज़न वी पिक्ड इट अप. हमारा भी सर्वे में यही आता है, about 50% of our consumers still thinks that we are imported. हाँ. yes. और इसी तरह एक और भी ब्रांड है, मैं खैर नाम ले लेती हूँ, OPTP. जब वो खुला था तो बिकॉज ही हिमसेल्फ केम फ्रॉम अमेरिका, तो हमें लगा कि अच्छा ये अमेरिकन ब्रांड है. और हम बड़े अमेज थे बिकॉज आई नो द फैमिली, जब उन्होंने बताया नहीं, हमने घर में बना के. तो पैकेजिंग और ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है. तीसरा जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि पावर ऑफ नेटवर्क. और यकीनन अगर आपके इतने दोस्त हैं, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में सालों काम करते हैं, उनके दोस्त नहीं होते, या तो अपने आप को हर एक से कंपटीशन समझते हैं. आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दिस विद यू मोर कि डू यू थिंक दैट नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंस इट हेल्प यू इन द बिजनेस. तो ये जो हमारे देखने वाले हैं, आप क्या कोई टिप देंगे कि हाउ टू बी गुड एट नेटवर्किंग एंड हाउ टू स्टे मेक एंड स्टे फ्रेंड्स विद पीपल हु आर इन कॉर्पोरेट सेक्टर? क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ होता है कि नहीं यार, इट्स The tip is very easy. Be honest with yourself and with them. I you know, at Lums I was I think I was very social from there because we used to have so many clubs, drama line and all of these HR and all of these marketing clubs. So we was very social from there, and that grew up in my role, and all of my life I have been in a role where I have interacted with a lot of departments, be it product development, so you are interacting with a lot of various departments within the organization, or be it strategy where you are coordinating with a lot of other various departments. So I've always interacted with a lot of people, and that's, I think, one of my core skill set was to interact with people and to get the job just done. Just be sincere. Yes, and so I always, what my bosses taught me was, you know, be straight up with people and be honest with them, because you can fool them once, you can fool them twice, but you can't fool them thrice. So it's better to be straight up from day one, and I think that has always helped me. मुझे ऐसा लगता even है at कि work. हम लोग ना हर एक को कंपटीशन की तरह से देखते हैं. कॉलीग है, हमें कंपटीशन फील हो रहा है. द रियलिटी है कि हर किसी का डिफरेंट स्किल सेट है, हर किसी की अलग जर्नी है. हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं, तो वही बड़ी अच्छी बात है. यू वर आस्किंग समथिंग. जर्नी पे मैं जानना चाह रहा हूँ, विंगिट से डिपिट, it has been around more than 5 years, I guess. Almost 5 years now. अब जर्नी आपकी Wingit अभी हमने close down किया हुआ है because we are again revamping it. अच्छा. Now I want to do it in a different model altogether. You would be seeing Wingit back again, I think from December, January. Alright. But we are doing it in a very different model, and we are doing it in Pakistan and few other markets altogether. So हम उसका क्या ये जहाँ हमारे distributors हैं Dipit के, they will have Wingit with them. Okay. So it will grow with Dipit along. अब तो डिपिट में पाकिस्तान से बाहर भी जा रहा है. So how it all started? पाकिस्तान से बाहर कैसे अपॉर्चुनिटी मिली आपको? पाकिस्तान से बाहर ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली. That's again a very You were lucky. I was very lucky again on that. I remember I went to a food exhibition called Food Africa. It happened in Cairo. और मैं उस food exhibition में I basically went to explore Cairo because of the pyramids and because of Egypt and all of that. So I went predominantly because of that. At that point of time, when I was at a stall, और मेरे पास again पैसे तो नहीं थे, तो मैं अकेला ही जाया करता था ऑफिस से. So मैं स्टॉल अपना लगा रहा था,
I remember सुबह का वक्त था, तो a very old gentleman came, a Japanese gentleman, and he said, "What are you selling?" So I said, "I'm selling sauces." And I think he was tired because he was having a round of the experience, so he was tired. So he sat down and I gave him water, and he said, "Show me." So I made him try. In my enthusiasm, I made him try. I completely forgot that he's Japanese, तो मैंने उन्हें habanero सबसे पहले try किया और उन्हें बड़ी spicy लगी. उन्होंने बोला, "You are selling this?" मैं, "Yes, I'm selling this." मैं बोला, "But I'm selling a lot of other sauces also." मैंने एक Japanese को अपना soya sauce try कराया. अच्छा. So वो मुझे बोला, वो इसको हटा दे, बाकी इस पर बात कर. सोया सॉस रहने दे. सोया सॉस रहने दे. तो मैं उनसे बात करने लगा, उनसे मेरी दोस्ती हो गई और मुझे नहीं पता वो कौन है क्या है, बस मेरी दोस्ती हो गई. मैं उनसे ऐसी मशवरा करने लग गया कि बताएं मुझे कि किस तरह है, जापानीज़ मार्केट क्या है, whatever. I never knew that he is one of the biggest distributor and retail chain person of Japan. Oh wow. I never knew that. And he said, "Son, I will help you." And then he gave me his card, which was in Japanese. I couldn't read it. And I kept it in my diary, and he left. And then I got a call from a little while later from Japan, कि जी, we have a Zoom call, please come on Zoom, blah blah is the link and the details. And so when I went on Zoom call, there was 9 people sitting in front of me and the chairman sitting, which was him, and the other director, finance director, फलाना ये वो फलाना sitting. And I was like, यार ये तो बड़ा आदमी लग रहा है मुझे, इतनी सारी फौज बैठी है इसके साथ और मैं अकेला बैठा हुआ हूँ. So he said कि भाई, we will get this from you. You will ensure, Zeeshan, that the quality of the habanero sauce that you showed me there will stay the same. So our first order is 1 full container of habanero sauce. Oh wow. Oh. And I was looking at to him and he said, "Don't worry, he'll give you a lot more." So from there it started off. And then the second incident happened that I was sitting in I was in a Gulf food, and after that I was going for my Umrah. And I went to Saudi Arabia, I did my Umrah and I was coming back. Or in a flight, I was sitting right next to a Pakistani. और ऐसी गपशप लगने लग गई और मैं अपनी बातें करने लग गया, वो अपनी बातें लग गए. तो मैं बोला, मैं सॉसेस वॉसेस बेचता हूँ. उसने बोला, अच्छा मैं काम वाम करता हूँ रिटेल स्टोर में. ना मैंने उससे पूछा कि तुम कौन से रिटेल स्टोर में करते हो, ना उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन सॉसेस बेचते हो. और हम दोनों जो है इसी तरह दुबई से वहाँ पहुँच गए, जद्दा पहुँचे. उम्रे के लिए मैं जा रहा था और वो गल्फ फूड से वापस जा रहा था, मैं भी गल्फ फूड से वापस जा रहा था. सो उसने बोला, अच्छा ये लो मेरा कार्ड. और मैंने उससे बोला, ये लो मेरा कार्ड. एंड वी एंडेड अप. एंड देन ओवर देयर आई डिड माई उम्रा एंड आई वाज लाइक, यू नो, जब वापस हो रहा था तो उम्रा करके वही जद्दा से आई हैड अ फ्लाइट बैक होम. सो आई सेड, ये इसका कार्ड भी जद्दा का है, इसके पास चले ही जाता हूँ, हेलो ही कर लेता हूँ. सो मैं गया तो वो पैंडा कंपनी थी. मुझे कुछ नहीं पता कि पैंडा सऊदी का सबसे बड़ा रिटेलर है और वो उसका कैटेगरी हेड है ग्रोसरी सेक्शन का. तो जब मैं गया उसने मुझे बोला, यार ये वो, मैं भैया मैं तुम्हारी गिफ्ट लाया हूँ. उसने बोला, क्या लाया? मैं यार ये मेरे पास सॉसेज थी, गल्फ फूड पर बच गई थी, मैं पाकिस्तान जाऊँगा उधर मेरे पास बहुत हैं, इधर तुम रख लो. ही वॉज अ पाकिस्तानी. मैंने चिली गार्लिक तुम्हारे घर वर में इस्तेमाल होती थी, तुम रख लो. उसने मुझे बोला, अच्छा सर देखो. उसने चिली गार्लिक ऐसी खोल कर ट्राई करी. आई टुक अबाउट 12 बॉटल्स. अच्छा मैं, उसने मुझे ट्राई की. उसने बोला, अच्छा सबर करो बैठो. तो मैं बैठ गया उसके पास. मैं मुझे कॉफ़ी पिला दो. उसने मुझे कॉफ़ी पिला दी. तो उसने मुझे बोला, तो मेरे पास इसलिए तो नहीं आया कि मैं पैंडा पर काम करता. मैं नहीं यार, आई सीरियसली आई डिडंट न्यू दैट यू वर्क हियर एंड दिस इज़ द चेन. मैं तो अभी आते हुए गूगल किया था तो मुझे ये पता चला. उसने मुझे बोला, अच्छा ठीक है बैठ जाओ. He went inside, he got about 4-5 people. One of them was Egyptian, जो कि उनका कैटेगरी डायरेक्टर था ग्रोसरी का. And he came and he said something in Arabic to them कि ये sauces try करो. So उन्होंने they ordered some food from the canteen and they got the food and they started trying it. Open bottle, हमारा अच्छा सा रैपर उन्होंने उतारा, बोतल को देखा, उन्होंने ट्राई की. उन्होंने उसको पूछा कि इससे पूछो कि ये बनाता किधर है. तो उसने मुझसे बगैर पूरे जवाब दे दिया, पाकिस्तान में, क्योंकि वो पाकिस्तान जानता था, पाकिस्तान में बनाता है. तो उसने बोला, नो दिस कैन नॉट बी मेड, दिस क्वालिटी कैन नॉट बी मेड इन पाकिस्तान. और वो इजिप्शियन मेरे पास आके खड़ा हो गया और उसने मुझे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बोला,
Do you really make it in Pakistan? I said, yes, I really make it in Pakistan. Or do you pack it in उस Pakistan? वक्त बेसमेंट में ही बन रही थी. उस वक्त नहीं बेसमेंट में नहीं बन रही थी, हम एक फैक्ट्री में आ चुके थे. तो उससे मैंने बोला yes we make it in Pakistan. So वो उधर से उसने हमें पसंद किया, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजा, उन्होंने बोला आप हमारे से एक्सक्लूसिव करेंगे 3 साल, आप किसी को भी नहीं देंगे सऊदी अरब. तो मैंने यार लोगों से मशवरा किया, सबने बोला भाई लोग ना इधर 6-6 साल खड़े रहते हैं, ये नहीं रखते, अगर ये तुझे जो भी दे रहे हैं ना साइन कर दे. फिर किसी ने मुझे बोला भाई ये बहुत सारे पैसे लेते हैं, तो मैंने उनको ईमेल पर जवाब दिया, मैंने कहा आई हैव नो मनी, मैंने यही लिखा है आई हैव नो मनी. तो उसका एक्सक्लेमेशन स्माइली आया, वी डोंट वांट योर मनी, वी वांट एक्सक्लूसिविटी फॉर 3 years. So I said okay fine, and they sent me a contract. Then right after that the COVID came in. So at that point of time our relationship with all of these people became very stronger, because Europe से जो वो sauces लेते थे, they started not coming there because Europe factories were down, supply chain was in a mess, logistics was in a mess. So everything was working in your favor. Yes. So when they asked me for help, send 2 containers or 5 containers in 1 week time. I ran the factory 24/7. I was sleeping there, waking up there, everything there, and we started giving it at the timeline that they wanted. So the relationship, the bond became very strong, and they respected that yeah, he listens to us, he responds in a positive way. I used to never say no to them. One was that it was business, but other I thought that अगर वो मुसीबत में, अगर मैंने आज हेल्प नहीं की उसकी, तो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, तो मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ. So I used to always tell them, don't worry, you have given it, it would be done. And we make it happen, we ran, so that's where the relationship. अब कितने मुल्कों में आपकी presence है? We are now in 22 countries around. Wow. Yes. And with how many variants of sauces? There's 61. 61 SKUs in more than 20 countries. वो SKUs flavor 61 है, SKUs ज़्यादा. Here it's a Cinderella story of the real world. I can tell you. Wow. Very अच्छा, एक बात दिशान में ज़हन में आ रही है, since you had no food education और experience, तो फिर वायरस के लिए तो फिर कुछ ना कुछ technical. My wife had a lot of food experience, not in terms of education. Preservatives भी use हो रहे हैं. अब तो it's now on the industrial scale. Yes, we got some people. You hired people. Yes, we hired people for that also. Also, my wife had a lot of experience because her father had a food kind of an industry. So she had a lot of experience of food from there coming in. Then right in the food का experience तो नहीं था, but मैंने cigarettes बहुत सारे बनाए थे. मैंने Marlboro Black Menthol बहुत बनाया था, मैंने Marlboro Ice Blast बहुत बनाया था. So we used to deal with tobacco, which was leaf. So I had done, in that 6-7 years of my life just dealing with leaf. And all of these preservatives and all of these things, steaming. Had the idea. So I had it. And then I remember in 2014, Philip Morris sent me on a training of cooking tobacco, because at that time we were working at this different cigarette which is now called जो electronic cigarettes जो आ गए, जो हो गए. So हम उस ज़माने में उस पर काम जब कर रहे थे, तो उसके बहुत सारे एक पूरी R&D पर they sent me to Lausanne for training and all of that. So I was kind of trained for a different product, but through the food science, through a different lens. Yes, they were preparing me for Dipit. So it's rather their investment in me which helped me across this. So yes, so वो experience बहुत काम आया. But you are right, and एक चीज़ जो आपने मुझसे पूछी थी, lot of time networking का एक और चीज़ which is another perspective is that if you work in a very win-win kind of a situation with other person, I think you create solutions. True. ठीक है? It a lot of time helps. The problem starts when you create a win-lose relationship, and that's where the relationship doesn't work out. That is true. अच्छा, एक और चीज़ आपके जो इतनी देर से सुन रही हूँ, it's the power of self-belief also. हमारे यहाँ लोग बहुत बेहतरीन ideas, product, वो अपने ऊपर यकीन नहीं होता, पता नहीं होगा. And अभी जितनी देर से मैं आपको सुन रही हूँ, आप बस आगे बढ़ रहे हैं. वो नहीं होता एक्सीलेटर पे पाँव रख दिया है और अब मैं रास्ता निकाल लूँगा, खड्डा है तो मैं स्लो कर लूँगा, लेकिन मैं रुकूँगा नहीं. तो डू यू थिंक कि ये जो पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ है, नो मैटर हु यू आर, वेयर आर यू फ्रॉम, हम्बल बैकग्राउंड, नो हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन अगर आपको कोई भी ख्वाब देखा है, क्वालिटी सब अपनी जगह, लेकिन
यकीन होना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर लूँगा। I think self belief तो देखिए fundamental है ना, अगर आपने कमिटमेंट्स भी की, हाँ ये हो जाएगा, हाँ कंटेनर आ जाएगा। I think self belief तो एक when you are an entrepreneur, if you doubt yourself, you're done from that day. So you cannot doubt yourself, यूथ you में know. डाउट बहुत है। आप किसी से बात करें, दे फील डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, डाउट है हर चीज़ में। डिप्रेस तो मुझे भी होता था कभी कभार। आई यूज्ड टू गेट डिप्रेस। एक बार मेरी पूरी सेल टीम जो थी और पूरी R&D टीम वो एक और कंपटीशन ने हायर कर ली। मैं उस दिन बड़ा सैड हो गया और मैं 1 महीने तक सैड ही रहा। तो जब तक सारे लोग वापस नहीं सारे लोग वापस नहीं आए। फिर मुझे किसी ने, दोस्तों ने मुझे बोला, अगेन माई फ्रेंड्स हैव बीन माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम एंड माई मदर, माई वाइफ, all of these my family. So again मुझे दोस्तों ने ये बोला उस वक्त, एक मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त है, उसने मुझे बोला कोई बात नहीं, तूने उनको भी ट्रेन किया था, तू और को ट्रेन कर ले। तो मैं उसे बोला मेरा यही काम रह गया कि मैं यही काम। उसने बोला कोई बात नहीं, हमने ही इज स्टिल एट फिलिप मॉरिस, तो हमने भी तुझे बहुत ट्रेन किया तो इट्स ओके। सो एंड आई सेड ठीक है। एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट आई पिक्ड इट अप, आई सेड इट्स फाइन। एंड फ्रॉम देयर आई सेड यार ठीक है। और मेरा अब फिर बन गया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि यार आप लोगों को जाने देते हैं, क्या कर रहे हैं आप। तो मैं बोला यार वो जाना चाह रहा है, मैं उसे कैसे रोकूंगा, वो जा रहा है तो मैं क्या करूँ, मिन्नतें तो नहीं कर सकता, बस जा रहा है, अल्लाह भला करे उसका। सो आई थिंक यू नीड टू जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। दैट्स माई काइंड ऑफ you know, और उसके लिए ज़रूरी है आप हर वक्त कोई ना कोई एक नया ख्वाब और एक नया गोल अपने सेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमने जब शुरू किया तो मेरी पहले महीने की सेल थी वो 2 लाख रुपए थी डिपिट की। और उधर से मैं सबको आवाज़ें मारा करता था। अपनी जो 3 बंदों की टीम थी तो तीनों को आवाज़ें मारा। और हम विंगेट के बेसमेंट से उठकर जब फर्स्ट टाइम हमने ऑफिस बनाया तो वो विंगेट के ऊपर बनाया। हमारी ज़िंदगी विंगेट के अराउंड बहुत घूमी है। तो बेसमेंट में हम बनाते थे, बीच में हमारा रेस्टोरेंट था, वहाँ हम कस्टमर्स को बुलाकर खाना खिलाते थे, ऊपर हमारा ऑफिस था। सो हम जब ऊपर थे तो मैंने एक नारा लिखा जाकर बोर्ड पर, मैं बोला वी विल बिकम 100 मिलियन। तो पहले तो मेरी बेगम ही मुझ पर हंसती रही सारा दिन कि ये पागल हो गया, ये संकी क्या कर रहा है। फिर मेरी टीम मुझ पर हंसती रही। तो मैं बोला यार ये कर लो कि मैं परेशान हूँ। बोला बहुत पहले महीने हमने ये की, आप बोलते साल के आखिर में ये करनी है, क्या हो गया आपको। बोलते तो हो जाएगा, डोंट वरी। एंड वी ओवर अचीव दैट। देन आई सेड वी विल डू 500 एंड माई टीम यूज्ड टू लाफ एट मी। फिर बहुत पागल हो, 100 से 200 नहीं बोल रहे, 500 बोल रहे। एंड देन वी ओवर अचीव दैट अगेन। बड़ी आपने काम की और बड़ी मज़े की बातें आपने बताई। कोई ऐसा सॉस बनाया जिससे नेगेटिविटी कम हो सके? बना रहे हैं हम, बना रहे हैं क्योंकि बाकी सॉसेस से तो मिर्चें ही लग रही है ना। मिर्चें ही लग रही है लेकिन इनकी जो पूरी बात है ना वो पूरी एक नेगेटिविटी को ख़त्म करने का सॉस। हाँ, और इस पूरे सोच में मुझे कहीं नेगेटिविटी महसूस ही नहीं हुई। यू वर सो एडमेंट कि आई विल मेक इट हैपन। वो जो आपने 100 मिलियन की बात की, तो एक सवाल जो बड़ी देर से तड़प रहा है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की जो ओवरऑल एक सिचुएशन है, बदकिस्मती से हमारे यहाँ देखिए अच्छे बुरे हालात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मुल्कों की तारीख का हिस्सा है, लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त कुछ नेगेटिविटी का एलिमेंट शायद ज़्यादा हमने फोकस किया है। और हमारी स्पेशली यूथ ये समझती है कि अब इस मुल्क में कुछ नहीं है, बस इस मुल्क से बाहर जाना ही हल है। जबकि दूसरी तरफ आप भी यूथ के एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपने ना सिर्फ इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के अंदर वो करके दिखाया जो कि ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर कारोबार फैलाने, एक नया प्रोडक्ट लाने का बाइस हुआ, बल्कि 20 से ज़्यादा ममालिक में आप इस मुल्क की एम्बेसडरशिप अपने प्रोडक्ट से कर रहे हैं। सो ये आपके लिए भी बड़ा आसान था कि बिज़नेस आपका डेवलप होता, आप कहीं और फैक्ट्री लगा लेते, कहीं और चला लेते। सो जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए आप अपनी बात से क्या मैसेज देंगे कि इस मुल्क में रहते हुए भी, यहाँ भी डेवलप करते हुए आप कामयाब हो सकते हैं? I think for me the most fundamental thing for anybody would be that you need to stay positive, keep believing yourself in what you want to do, and also at the same point of time do your numbers. I always tell to my team and to my team कि यार ठीक है gut feel होती है लेकिन उस पर थोड़ा 2+2 ज़रूर कर लिया करो, just don't go blindly for it. And I still till today I always go with my gut feel. If you ask people who are in my inner circle, they will say he will just go with his gut feel. But I always do my numbers also at the back end. मतलब बहुत ही मोटे rough numbers I always do कि this is how you do.
because I think once you do that, that gives you in self confidence, that gives you in a belief that you know what you're doing is right, and once you get that feeling, you need to self start yourself and then start pushing that up down the line wherever you are working or whatever you are doing, and keep on doing that, because it's not एक बार आपने वो self starter या pusher बनना, you have to do it day in day out and keep on doing that. Keep your eyes on the horizon but your feet on the ground. Exactly, and just be straight, because lot of the time there's noises from left right center, जिस आपने की नेगेटिव ये चीज़ें होती रहती हैं और ये हर जगह होती हैं और हर कैटेगरी मतलब हर तरीके से होती हैं, यू नो, ऑफ वेरियस वेज. Try to ignore them, stick to what you want to do, be positive about it, do your numbers, stick to your core, and stick to your fundamental values जो हैं, and then there you go. You don't need to look back at things then. For me it's a very simple, I still today follow the same formula that you know, you once you decide on something and you are solid out at it, then just go for it. Just don't think कि क्या होगा. अगर क्या होगा सोचने बैठ जाएंगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा. Just do it, you know. And I think that's where that would be my message at some point of time to youth would be that a lot of time I see them not making a decision. बचपन में माँ बाप करते थे, बड़े होकर कोई और करता है, you know, so वो अपनी डिसीजन मेकिंग फिर बॉस की बात सुनने लग जाते हैं, जब होते हैं असातिज़ा की बात सुनने जाते हैं. भाई अपने डिसीजन आप खुद लें, और जब तक आप खुद नहीं लेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप डिपेंडेंट नहीं बनेंगे. आपको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और अपने डिसीजन खुद लें, ताकि आगे आकर भी आप इंडिपेंडेंट हो सकें, डिसीजन ले सकें. और वंस यू बिकम अ डिसीजन मेकर अर्ली ऑन इन द लाइफ, then things become easy for you, you know. Plus you don't have anybody to blame, so you take full responsibility. Then you have to, that's a very good point that you have. Otherwise जो आप दूसरा डिसीजन लेता है ना, तो I used to always think कि मैं किसी बात तो मानता नहीं हूँ, तो अगर कुछ उल्टा हुआ तो ये बोलेंगे Same is the case ये तो with me. I don't तुम्हारा ही even मसला है, ये ask तो तुम ही ने किया था और तुम्हारा तो गड़बड़ करके भी तो फिर वो होता है कि आप खुद ही ठीक कर रहे होते हैं, क्योंकि because you are the only one who has done the गड़बड़, so you have to do it. अच्छा, और एक पॉइंट आता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है, ऐसे मेरे केस में अगर मैं कभी गलती से पूछूं कि हाउ अबाउट दिस, आगे से जो करीबी लोग हैं, यार तुमने सुननी तो है नहीं, तो वट एवर गो विद योर कट. अच्छा जीशान, टुवर्ड्स अब हम एंड करेंगे, ऑल्दो इतना इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन रही है कि अभी भी देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड, लेकिन वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है. हमारे पास एक सेगमेंट होता है जिसमें हम विच इज़ कॉल्ड स्पॉटलाइट विजडम, और इसमें हमारे जो सवालात होते हैं उनके शॉर्ट क्रिस्प आंसर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं. और सारे क्वेश्चंस यही होंगे आपके जर्नी के हिसाब. I would say empowering a lot, but I'm very quick at making decisions. So, and I expect people around me to do the same. I don't know how to define this in one word, but for me it's very. You're an enabler. Yes, I always say, you know, ये ना decide कर लो जो भी करना है, but decide कर लो. So whenever you get off my table, you have to pick one, you know, because I believe that it's better to make a right decision today rather than make a wrong decision today rather than make a right decision when it is not needed after a month. और हमारे यही होता है, एक महीने बाद जाकर लोग ना सोकर उठते हैं और बोलते हैं अच्छा ये कर लेते हैं, तब तक गाड़ी निकल चुकी होती है. सब कुछ होता है. Any secret talent that people don't know about? Could be you can play guitar or sing or paint art, any secret talent, anything that people don't know about now. Of course. I think now I'm not social as much, but at one point of time in my life I was very social. You know, so you became an introvert over the years. I don't know, introvert तो मैं भी नहीं हूँ, but I think I became less social. एक ज़माने में मेरी अम्मी मुझे आवारा कहा करती थी, मैं रात के 3 बजे आता था घर और सारा वक्त मैं दोस्तों में रहता था. I think वो अब हो गया. Priorities changed. I think priorities changed. जब किसी को हायर कर रहे होते हैं कैंडिडेट को, व्हाट इज वन थिंग जो आप ज़रूर देखते हैं? डिसीजन मेकर. इंडिपेंडेंट थिंकर एंड डिसीजन मेकर. या ओके, डिसीजन मेकर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी.
How to retain a good employee? कोई चीज़ जो Not by money, for sure. Okay. Not by money. So then what? I motivated, get him aligned to what you want to achieve. I think that's how I have been groomed. I've in my entire corporate life, not Dipit, corporate life, I've never asked my boss कि मेरा appraisal कितना होगा, क्या होगा, मेरा next promotion क्या है. मुझे सब कुछ खुद मिलता गया. You know, they have trained me in a way कि तुम मेहनत करोगे तुम्हें खुद मिलेगा, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं होगी. और अगर नहीं भी मिला कभी, we were okay with it. We said कि आज नहीं कल हो जाएगा. You know, so I because we were aligned to the goal कि यार ये acquisition successful करनी है, ये merger successful करना है, ये product launch करना है, ये market सारी सही करनी है. Every time I was given one big, you know, agenda. जब भी जिसका मैं जब था तो मुझे एक बार काज़ाकिस्तान जाना था, एक कोल माइन का एक्विजिशन था. So again, idea was given to me was one line from my boss कि एक्विजिशन हो गया है, इसको अगर सीधा करो. And that was all given to me. The best advice you ever received? Best advice I ever किसी से भी? received. Be Could be short and anyone. precise and do the numbers. I think that's the best advice. Be brief. Be And brief. now people are not brief. They have their whole story to write in text. Right. मैं ये सोच रही हूँ कौन से छोड़ूँ. Your go-to stress busting activity? Sports, badminton. You play badminton Yeah. still? Okay. Sometime. Cool. Any book or podcast or movie that you would recommend people to watch or read or listen to, जो कि उनकी ज़िंदगी में change ला सकती है? Anything. The couple of हैं which I would say कि as a basic आपको पढ़नी चाहिए. I think Monkey Ate the Cheese. There was something like that. That was one. A couple of others which I think you can read on business or something like that. But I think basic for me, these inspiration come a lot of time from religious stories and of prophet. I drive my inspiration sometimes from there a lot. The lesson that you learned from any business failure? Yeah, a lot. Sometimes making a very quick decision is also not good. So you need to, you know, just take it a little bit time to think. So numbers are very important for the youngsters to know and to get their basic understanding and grip on it. यहाँ पर I think this is one thing, and second is be a decision maker. Don't wait for other people to make a decision for you. You Take control take the of your lead life. and take the decision and stand with your decision. गलत भी होगा कभी कभार, बहुत बार तो सही भी होगा. जब गलत होगा तो आप सीखेंगे, जब सही होगा तो आपको शाबाश मिलेगी. बट ना डिसीजन लेना ये ऑप्शन नहीं रहा इस ज़माने में जिस वक्त AI और ये सब आ गया है. सही बात. आप नहीं लेंगे तो कल वो रोबोट ले रहा होगा आपके बदले में That is decision. true. That is true.
थैंक यू सो मच ज़ीशान। क्या शानदार इंस्पिरेशनल केस स्टडी है ज़ीशान। हम बहुत थैंकफुल हैं आप आए और आपने वक्त निकाला। मेरा ख्याल ये स्टोरी किसी बॉलीवुड मूवी से कम स्टोरी नहीं है। ये स्ट्रगल और ये इंटेंशंस और ये सारी चीज़ें जो आपने जमा की। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम हिदायत साहिर है। उन्होंने एक दफ़ा एक बड़ी अच्छी बात मुझे कही जो अभी आपकी स्टोरी सुन के मुझे याद आई। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में आप अपने ख्वाब बड़े रखें और ख़दशात छोटे रखें। आपकी बात इस बात का मेरा ख्याल अमली सबूत है कि आपने अपने ख्वाब पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हर ख्वाब देखने के बाद उसकी तकमील के लिए कोशिश की और उस ख्वाब को बढ़ाते चले गए और ख़दशात की तरफ ना मुड़ के देखा और ना उनकी तरफ तवज्जो दी, सिर्फ उन्हें मैनेज किया। और आज आपकी सक्सेस स्टोरी हमारे सामने है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आपसे हम कोशिश करेंगे दोबारा भी मुलाकात करें और कुछ नया सीखें। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर, वाज वंडरफुल हैविंग अ चैट विद यू गाइस।